Ladies and gentlemen, presenting the Almost Famous! Does she love to fight or does she think that speaking out is right? पायल रोहतगी ने काफी लोगों पर बहुत ही serious इल्जाम लगाए हैं. So is she wrong or is she right? That's why Payal Rohatgi is on my show today, Almost Famous. Hey Payal, welcome to Almost Famous. Thank you, Simi. पायल, आप जानती हैं मेरे शो पर जब लोग आते हैं, there are three reasons. They're either very sexy looking, they're controversial, and they're outspoken. And I think आप में वो तीनों qualities हैं. So I'm hoping that this episode is going to be a very interesting and spicy episode. I hope so too. I'm going to be taking all these compliments in a positive way. Yes, the compliments and the controversies. But जब आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाती हैं और काफ़ी लगा चुकी हैं आप इल्ज़ाम, तो आप सोच समझ कर लगाती हैं. Is it planned? Is it plotted? Or do you just decide to react in a certain way कि जो दिल में आया वो कह दिया? You know, I'm a Scorpio. We are honest people. We come across little difficult, but हम लोग जो मन में होता है ना बोल देते हैं. And sometimes I've learned that it is not the right thing to do. यही quality मैंने अपने boyfriend से सीखी है because वो काफ़ी हद तक कूल ठंडे होके डील करते हैं लोगों के साथ एंड मैं अभी तक आई यूज्ड टू रिएक्ट वेरी मच. आई थिंक मे बी बिकॉज आई यूज्ड टू लिव अलोन ऑल्सो, सो इट बिकम्स लाइक यू नो Defense mechanism that you want to be tough. And nobody can take advantage. Yeah, so एक हो जाता है impulsively. आप जब सर्वाइवर के शो पर थी तो वहाँ पर काफ़ी कॉन्टेस्टेंट्स थे एंड देयर इज़ वन पर्टिकुलर कॉन्टेस्टेंट जिनके साथ आपका काफ़ी पंगा हो गया था. आई एम टॉकिंग अबाउट मोनिशा खटवानी जो एक टैरो कार्ड रीडर हैं एंड आपने उनके बारे काफ़ी कुछ कहा कि वो लोगों की गंदी अंडरवेयर्स धोती थी एंड मर्दों की चेस्ट को शेव करती थी एंड दैट बिकेम क्वाइट अ कलरफुल इंसिडेंट. एटलीस्ट वी enjoyed it. देखिए मुनीशा उनका कंट्रीब्यूशन शायद टास्क्स में और इतना कुछ नहीं होता था. पीपल यूज टू कॉल हर इम्यूनिटी आइडल. सो इट फॉर द सर्वाइवर शो. फॉर द सर्वाइवर शो जब उनका एलिमिनेशन हुआ तो एक एक्सक्लूसिव एपिसोड कटता है जहाँ पे उन्होंने मेरे बारे में not so good things कहा. Not so good things like you and Sangram were and our making out and that you were physical with each other. And you know, we were single at that time and we used to spend time with each other. संग्राम की एक अच्छी बात है, वो बहुत हंसी मजाक में सिचुएशन लेते हैं. वो बोलते हैं झाड़ी हमारी, पायल तू, बुश हमारा, पायल तू तेरा अपना मर्जी, मेरी अपनी मर्जी, हम लोग कुछ भी करें एक दूसरे के साथ. Why are people getting so affected? And we were very open about our fondness towards each other because we got close on the show. फिर उसके बाद फुटेज दिखाई कि कैसे वो कपड़े धोती थी, the undergarments bit and the shaving chest bit. So this is not what I made it up. I saw it. And which I did. Didn't she file an FIR against you? Or? That's what, yeah. She did that on the finale day. Well, Payal, you also seem to be very comfortable with PDA, जो हमारे viewers को अगर नहीं समझ रहा है, it means public display of affection. तो जैसे कि आप बता रही थी कि झाड़ी हमारी, बुश हमारी. No, that was because one contestant said that Payal और संग्राम जाते थे and जब आते थे तो Payal used to blush. So basically contestants ये कहने की कोशिश करते कि you're always having sex. You think they were jealous? Maybe, but I just want to tell you, it's very difficult to get into that physicality when you have not had bath since so many days, when you have no shampoo, when you have not soap, there's no sanitizer. I don't think that is my idea of getting, intimate with somebody, at least the first time, like that way. But yes, we used to spend a lot of time sitting with each other. You were completely very open about your physical intimacy with Rahul on the show on Big Boss. So were those also just feelings or was it more for camera viewing or what was it? That was my first reality show. When I entered the show, now that we are talking so openly, I was dating Rahul. And जब आप किसी को you are in that kind of a relationship with somebody, आप
चाहे कितना भी छुपाओ नहीं छुपा सकते हो। अगर आप पीडीए की बात कर रहे हैं साथ साथ में आपने मुझे देखा होगा, आई वॉज अ इमोशनल wreck. I had seen a lot of, because that PDA was just a span of Yeah, but that was the more interesting part, you Yeah, know, but- where you guys were very intimate, and I think you were in the pool, or was it a jacuzzi? No, it was Big Boss couldn't afford a jacuzzi. it was a dirty pool. A pond? A pond, because Big Boss we used to get weekly tasks where they wanted us to play volleyball. The team was already decided by Big Boss. The pond was 6 feet. I'm 5'7". They showed me when I'm entering the water. And when Rahul was helping me to, you know, place myself in the water, because I was very 6 feet, गंदा पानी, but चलो खेलना है, otherwise राशन नहीं मिलेगा, so they'll vote me out. It is up to the channel to show a shot कि उनको क्या दिखाना है. अभी वो अगर टावल निकालने वाला शॉट दिखाएंगे और वो ही अगर एक न्यूज़ चैनल पिकअप करेगा एंड उसकी ही क्लिपिंग हर एक 2-2 सेकंड के बाद दिखाएंगे, तो is it my fault? Rahul is pretty well known for his violent nature, his temperament. We all know that he was into substance abuse, he was into drugs. He has a lot of alcohol from whatever we've heard, and he's had, you know, police implications and all that. When his friend actually died of overdose of cocaine. You're an engineer by education, and you seem pretty intelligent. So what was the I'll tell chemistry you. there? I come from Ahmedabad. When I had shifted to Bombay some 8 years back, he was a part of my group. We were very good friends. We were never in a relationship at that time. There was a time, I think after he had filed for his divorce, that he and me connected again. And जब कोई आपको कहता है कि पायल, I need your help to sort out my life. I am fond of you. I like your presence. You please stay with me. I trusted him. He was not a bad person at that time, or I don't think still he is a bad human being, but sometimes circumstances make you like that. But then slowly like, you know, things start uncovering, and I think सबसे बड़ा truth तो Big Boss पे आया, because by that time we were in a relationship for 6 months, and Big Boss पे जाते ही his affection went for some other contestant, and that was very open on national television and very shocking for me. I think जो भी होता है, it's a closed chapter now in my life. But he also indulged in physical violence with you. Yes, आपने once in or fact twice. allegation लगाया Yeah. था. And then when it happened to Dimpy, जब उन्होंने शादी की, what were your thoughts when she was accusing I him? felt really bad for her, but I think that also again turned tables Yes. on me. डिम्पी ने इनफैक्ट आप पर accusations लगाए Yeah. कि आप उनके हस्बैंड को स्टॉक करती हैं और फॉलो करती हैं. So it just seemed like आप you hadn't gotten over Rahul, and that, you know, you were still trying to pursue him. Yeah, I would just say that she was some 20 something at that time, and I think उसने 2 दिन पहले ही एक लीडिंग न्यूज़पेपर में अपनी स्कर्ट ऊपर करके अपने वूंड्स दिखाए थे, फ्रंट पेज स्टोरी थी, एंड 2 दिन के बाद यू सी देम एट सिद्धि विनायक सेइंग दैट ही जस्ट बॉट मी अ मर्क. सो दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि किसने क्या बोला, किसके लिए बोला. ये जो बॉलीवुड है, यहाँ पर there's one unwritten rule कि जब भी कोई लड़की किसी फिल्म मेकर के अगेंस्ट कुछ बोलती है and she makes a casting couch kind of allegation, her career is usually over. So जब आपने दिबाकर के बारे कहा कि वो आपके घर आए, उन्होंने कहा टी शर्ट उतार के, you know, show me how much weight you've gained and all that kind of stuff. So he completely denied it. Can we just have the truth once and for all with complete honesty here? दिबाकर ने एटलीस्ट इतना तो बोला था कि वी वर फ्रेंड्स, वरना किसी को मैं घर पे क्यों आने देती, यू नो. बट देन द होल थिंग गॉट ब्लोन रियली आउट ऑफ प्रोपोर्शन. वहाँ पर अनुराग कश्यप, even he came and you know, kind of took up for Yeah. Dibakar, not you. Yeah. And they all continue to call you a psycho and that you need Yeah. you know, psychiatric help and all Yeah. that. So how did they all get involved? जाहिर सी बात है सिमी, अनुराग उनके दोस्त हैं. अभी दोस्त चाहे कुछ भी करे, he has to stand by him. Would you ever do it again if somebody ever tried to exploit you? Would you keep quiet or would you still blow the cover? I might have still not reached and become an A+ grade actress. I am still struggling to kind of, like you say, get more famous and make a living in this industry. But I am at peace with myself. I think by now I know how to keep off from people who would create such a situation in my life. तो पायल, ये हमारी जो चैट है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, लेकिन हमारे व्यूअर्स यही सोच रहे हैं कि why are we sitting on this couch in your living room? So should we show them around the beautiful ocean view and everything that you enjoy from your home?
Yes, we can go to Martins. Yes, and we can continue our chat there. Sure. Your ex-boyfriend was actually into drugs. Didn't No, you ever I am- get tempted to do all the things that he was doing, whether it was that way I am- drugs, alcohol, itni sari weaknesses, I such a was- tough life in Bollywood? I used to socially drink before. I saw that side of life. But drugs and all that, no. I think that is something that scares you. Presenting the Almost Famous! तो पायल, यू हैव दिस ब्यूटीफुल व्यू हियर. पीछे हमारे पहाड़ियाँ हैं, थोड़ा सा ओशन दिख रहा है, आगे ऑफ कोर्स बहुत सारा ओशन है. तो जब आप काम नहीं कर रही होती हैं, शूट नहीं कर रही होती हैं, what are you doing then? Because I don't see you any of the page 3 parties पे आजकल आप दिखती नहीं हैं. This is courtesy Sangram Singh. He has not stopped. In fact, I have willingly given up, the socializing bit, which is not related to work. Because हम दोनों खुद में इतना खुश है ना कि हम लोग ने अभी एक नया घर भी लिया है. तो we are more into establishing ourselves कि career wise हम दोनों establish करें, काम करें, so that we have a future together. उसने मेरी आदतें सारी बदल दी है. You won't believe दूध and च्यवनप्राश and आंवला powder and some नई thing he got from Haryana in this डिब्बी जिससे आयु लंबी होती है. तो he is like a different antithesis compared to me. But Any desi Viagras? no. No, I don't think we need that. Okay, जब संग्राम हमें यहाँ ज्वाइन करेंगे तो फिर हम उनसे ये पूछेंगे. But right now, No, nothing of that. But everything to with health and better immunity system, better stamina. so what is a sexy girl, item girl, controversial girl doing living with her nani? People start taking you lightly if you don't have a family around. And तो शायद नानी अगर पहले भी होती तो दिवाकर बैनर्जी आके ये नहीं कहते कि अपनी टी शर्ट उतारो. Correct? obviously she knows all the controversies that have happened in my house, in my life, and she says अभी कोई आके तो दिखाए सोटी लेके मारांगी. She's a Punjaban सरदारनी, तो she's सोटी लेके मारांगी. So she's like this protective thing, who is so much fond of me. And trust me, Simi, I have not had a single person standing by me when I was down and out. So all this so-called friendship was, I think I evaporated in thin air. पायल, आप एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम चली गई हैं. You are saying कि अब मैं दूध पीती हूँ, मैं च्यवनप्राश खाती हूँ. Yeah. And then there was Rahul Mahajan, who was like completely into all kinds of substance Vices. abuse and Yeah, vices and yeah. violence and drugs and drinking and everything. इतना complete change from one I think guy that's- who was so wild to a guy who's like completely so disciplined. Sangram. Yes, he's not that rich or blah blah blah, but he's a very hardworking, dedicated, nice human being who loves me more than himself. Experience, my biggest teacher, has taught me to have a good partner in your life, a good human being. All these superficial things, we can get them anytime, but if your partner is into a bad human being, then I think your life is doomed. Payal, you're so involved right now with other causes like human rights, and of course you're also supporting an organization that kind of, educates people about substance abuse, about drugs. It's called Jeevan Dhara. Yes, Jeevan Dhara, जहाँ पर वो लोगों को help करते हैं to fight their drug addictions and everything. But that's a completely contradictory thing for me, because I'm sorry I'm bringing this up again and again, but Yeah. your ex-boyfriend was actually into drugs, and No, now you're that's supporting why- this organization. Didn't No, you ever I am- get tempted to do all the things that he was doing, whether it was that way I am- drugs, alcohol, itni sari weaknesses, I such a was- tough life in Bollywood? I used to socially drink before. I saw that side of life. But drugs and all that, no. I think that is something that scares you. But you were living with one guy who was doing No. this. तो कहीं पर His agenda for meeting me first time was that, Payal, I want to go clean. But to go clean, I need somebody to stay with me. तो पायल, casting couch, all these passes that have been made at you, हमने सब कुछ कह दिया है. And एक question अब भी रह गया है. करण पटेल, उनको आपने rapist कहा है. उनको मैं जानती नहीं थी. उनके बारे में मुझे पता भी नहीं था. उनको मैं Survivor में मिली. He didn't say few nice things about me on the show. Not few. Nothing he said nice about me. But after the show got over, I think he connected with me as, wanting to be friends and stuff like that. During one of the interactions, जैसे हमने बात करी, Bombay is full of people who have
some vices and they react in those vices. So he came knocking on your door in the middle of the night. Something like that. I thought it is best to kind of be away from such people. पायल, आपका ये जो घर है, पता नहीं इसका वास्तु क्या है, but all the rapists and all the, you know, sexually exploitative people have been to this home, but there's some good news for you. और अगर हमारे viewers ये देख रहे हैं, ये जो पीछे building है, पायल is shifting there and she's just bought a brand new home there. So, and she's going to be with Sangram Singh there, so I don't think there'll be any more rapists coming and knocking on your door. So don't go away anywhere because now we are about to reveal a beautiful love story and Sangram Singh is going to join us and there's no wrestling here today. Just lots of love and of course हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, बहुत सारी controversies हैं, we will uncover those again. आप बिग टॉस एक शो कर रहे थे, उस शो में आपके साथ वीना मलिक भी थी, काफ़ी दौरे डाल रही थी वीना आपके ऊपर उस शो पर. हाँ थी डेफिनेटली. उसके लिए मुझे काफ़ी पैसे भी दे रहे थे स्वयंवर के लिए. एक तो क्योंकि पायल मेरे साथ है, पायल के साथ हूँ, मैं काफ़ी ऑनेस्ट हूँ, जिसके साथ हूँ उसके साथ हूँ. वीना जा जाती है वो कुछ न कुछ बंद करवा देती है. अब देखो चैनल नहीं बंद करवा दिया. Presenting the Almost Famous. So Sangram, welcome to Zoom and welcome to Almost Famous. And पायल आज सिर्फ आप ही की बातें करने की कोशिश कर रही थी, तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था कि मैं बाकी लोगों के बारे में पूछूं. कोशिश कर रही थी या कर रही थी? Well, she was only talking about you. She was trying to. ऐसे लग रहा है that you've completely changed her life. अब तो बेचारी दूध पीती हैं, च्यवनप्राश खाती हैं. क्या हो गया मेरी लाइफ को? Oh my God. जो हम यहाँ पार्टीज करते हैं या ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं या सब कुछ करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली लाइफ की ये रूट होती है जो रूट कमज़ोर पड़ जाती है. ये लाइफ है, शो ऑफ की लाइफ है. अगर आपको इस इंडस्ट्री में काम करना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जैसे मैं स्पोर्ट्स से हूँ, तो यहाँ भी आपको अच्छा दिखना पड़ेगा, आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा. अगर आप ड्रिंक करेंगे, स्मोक करेंगे, कितनी देर तक? आप लोगों ने अभी अनाउंस किया था कि यू लोगों गेट मैरिड एंड फिर आप शादी करते करते रुक गए और डिसाइडेड दैट यू वांट टू मेक मनी एंड नॉट गेट मैरिड एंड एंगेज राइट नाउ. आप भी अपना फोकस कैरियर के ऊपर कर रहे हैं, तो शादी के 2 साल बाद कर लेंगे. आप बिग टॉस एक शो कर रहे थे, उस शो में आपके साथ वीना मलिक भी थी, तो हमने सुना कि शी काइंड ऑफ लाइक्ड यू और काफ़ी दौरे डाल रही थी वीना आपके ऊपर उस शो पर. एक्चुअली वीना भी मतलब एक मेरी अच्छी दोस्त थी, दोस्त की तरह थी. शी वॉज अट्रैक्टेड टू यू. हाँ थी डेफिनेटली. अगर स्वयंवर वो शो अब पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट आपको ऑफर किया गया तो आपने नहीं क्यों कहा? इट्स अबाउट मनी, इट्स अबाउट शोबिज़. नहीं, एक्चुअली ये था कि उसके लिए मुझे काफ़ी पैसे भी दे रहे थे स्वयंवर के लिए. एक तो क्योंकि पायल मेरे साथ है, पायल के साथ हूँ, मैं काफ़ी ऑनेस्ट हूँ, जिसके साथ हूँ उसके साथ हूँ. ऐसे शो में जाने से जो अब तक मैंने इतना किया, जो इतने अवार्ड जीते अपनी कंट्री के लिए, इतना सब कुछ किया, तो मेरे हिसाब से अपने आप को मारने वाली बात थी. वीना जा जाती है वो कुछ न कुछ बंद करवा देती है. अब देखो चैनल नहीं बंद करवा दिया. संग्राम, आप मुझे बहुत हंसा रहे हैं एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई पायल इज विद यू. यू सीम टू बी अ लवली पर्सन एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू ऑलमोस्ट फेमस. थैंक यू जी. तो अब हम मिलते हैं पायल रोहातगी की नानी से, जो यहाँ पे सिर्फ नानी ही नहीं बन के रह रही हैं, बट बन गई हैं पायल की बॉडीगार्ड. तो जब पायल को लोग सेक्सी बोलते हैं, लोग कंट्रोवर्शियल बोलते हैं, तो तब आपको कैसे लगता है? कैसे अच्छा लगेगा? नहीं लगता. यंग आदमी को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ओल्ड हो जाता है तो थोड़ा कम अच्छा लगता है. मुझे तो आप भी काफ़ी ग्लैमरस लग रही हैं, आप भी काफ़ी सेक्सी लग रही हैं. I was fond of these things in the young age, but at that time parents doesn't allow. अब अगर पायल को किसी ने छेड़ा या कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की, अब तो आप यहाँ पे आ गई हैं. कोई आ सकता नहीं. हाँ, एज ए फ्रेंड ए पर्सन कैन कम, बट नॉट फॉर दैट. What? What? What, Nani? I am quite powerful. तो आप क्या I am करेंगी? old, though no doubt, but I am you're strong. powerful. I am strong. तो अगर आप होती तो क्या करती? Nobody can dare come here. मैंने जैसे कि कहा कि पायल की बॉडीगार्ड यहाँ आ चुकी हैं एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ब्रॉड माइंडेड हैं, एंड आई थिंक शी इज़ फन टू चैट विद. थैंक यू फॉर टॉकिंग टू ऑलमोस्ट फेमस आंटी. वंडरफुल मीटिंग यू. Thank you.